players here that we've got. We've been working exceptionally hard on making sure that they're ready for the first challenge. Yeah, you're right there. It's obviously, the year after any mega auction is probably the most challenging time for probably captain and coach, to be honest, when you have so many new, fresh faces around. But it's also the most exciting time as well to be working with some of the under-19 boys and different guys from different franchises that have been in different environments. So, no, look, it's been a lot of fun. I actually think our group's come together exceptionally well. When we were at the auction, we've been able to bring some players that have been at other franchises together. You think of Sarfraz and Mandeep, and then someone like Kuldeep and Nagakordi, guys that actually are quite good friends anyway. So we've been able to bring them together into our group, and because they are friends, it's sort of meant the dynamic of the group as gelled together really quickly and really strongly in only a short period of time. So I think we've only been out in training for 7 or 8 days now, but the group's come together great. We've had some good outside training activities as well, just to bring the boys together. But so far so good, and we've got a really exciting group of players that I'm looking forward to starting out with tomorrow. No, not at all, because we haven't spoken about it at all. We've got the players here that we've got. We've been working exceptionally hard on making sure that they're ready for the first challenge, which is tomorrow afternoon. And we know, in the next few days, next few weeks, that some of our overseas players will arrive. I mean, there's 2 here now, Mustafiza and Geedy are here now in quarantine. With Seifert and Norki are obviously here as well, and Rodman's been really impressive in everything that he's done at training and in the practice matches for the first couple of games. So, look, no, we've got what we've got. I believe we've got a really good depth throughout our squad. Yes, we are missing some overseas players for the first couple of games, but that's no worry to us whatsoever. I think a lot of the teams are in a similar boat to us, so we're just pushing forward, making sure our players are well planned and well prepared, and I fully expect, even with a slightly weakened team, if you like, for our first couple of games, that I fully expect that we can get off to a good start on Sunday. I think in the starting it might seem a little bit, and as the season progresses on, it's gonna get slower and slower. That's what the main thought process. Let's see, we haven't seen the wicket. We are going today for the first time. Let's see how the wicket ends, then think about it. हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू दिल्ली क्या चाहता है। एक नया सीजन, एक नई शुरुआत और एक नए साल के साथ टीम में काफी नए चेहरे भी हैं, पर वो हमेशा जब एक साइकिल कंप्लीट होती है वो फैंस को यूज टू होना पड़ता है। काफी एक्साइटेड हैं और आज हम अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए और क्या लगता है उनके फैंस को वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं 4 लोग। शगुन गर्ग, जो कि पहले भी आपने देखा होगा इनका चेहरा काफी बारी, ये फाउंडर हैं, होस्ट एंड अदर क्रिकेट टॉक के हमारे साथ आज। हाय शगुन। देन हमारे साथ हैं पुरु सिंह, जो कि एक फाउंडर हैं पुश क्रिकेट के। इनकी भी एक क्रिकेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे साथ बात करेंगे कि DC 11 के बारे में और DC की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, वो किस हिसाब से जाएगी। फिर हमारे साथ हैं धवल शेटिया। ये है तो एक DC के शो पे, पर ये एक मुंबई इंडियंस सपोर्टर है। ये बात करेंगे मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि क्या लगता है कि कौन सी टीम, मुंबई कितनी स्ट्रांग है और मुंबई की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। के साथ में होस्ट है, इनकी भी एक स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है, काउच पंडित स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। और फिर हमारे साथ हैं एक हम काफी हम जैसे लोगों की तरह शिव बिंद्रा, जो कि एक फैन है, काफी एक हार्डकोर सपोर्टर है। इन्होंने DC की जो फ्रेंचाइज है उनके अप्स और डाउन सब कुछ देखे हैं। शायद ही कुछ लोग होंगे DC टोली में जो इनके जितने एक्साइटेड होंगे। तो मेरे को बहुत खुशी है एक प्रॉपर फैन को भी शो में लाते हुए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड एक बारी जोरदार तालियां सबके लिए, और होपफुली आप ये डिस्कशन एंजॉय करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। सो टॉस की न्यूज आ चुकी है कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है और बॉलिंग चूज करी है। मैं सारे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उनकी क्या ओपिनियन या राय है इस बारे में। शगुन, आपको क्या लगता है कि ये एक सही डिसीजन है, और आपका क्या थॉट्स हैं प्लेइंग 11 को लेके? Thank you, Gurkirat, and welcome everyone to a new season. मेरे हिसाब से आई थिंक टॉस इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि डे मैच है, एंड ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे आई थिंक लास्ट IPL मैच जहां तक मुझे याद है 2015 में हुआ था। तो पिच का हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन डे मैच में टॉस इतना मैटर नहीं करना चाहिए अनलेस स्ट्रेटेजिकली यू वांट टू बोल फर्स्ट, जो कि आई थिंक दिल्ली ने किया है, एंड दिल्ली हैज वन द टॉस।
And in terms of playing 11, एक तो it's a first I think कि दो foreigners ही खेल रहे हैं. I know we didn't have enough players available, but दो foreigner खेल रहे हैं. एक I think it's a record of some sorts. And I'm very shocked कि Sarfaraz is not in the 11. I think Delhi bet big on him. तो वो थोड़ा सा shocking factor है कि he's not playing in the first game, especially when there were only 2 foreigners available. तो वो देखना पड़ेगा कि मनदीप सिंह को prefer किया है, how that goes forward. But overall, I think first game है, they are also testing out कौन से players अच्छे चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे. Lalit Yadav is also preferred here. So I like the 11, but I think Mumbai has given out 4 caps to uncapped players. So it will be interesting to see. काफी नया combination है, काफी नया look है इस IPL का. एक बात आपने सही बोली कि सिर्फ 2 फॉरेनर्स हैं, शायद हो सकता है ये किसी रिकॉर्ड की बात हो, पर मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली का हमेशा एक स्ट्रेंथ रही है जो उनका इंडियन कोर रहा है, तो दोबारा से आपको इंडियन कोर पे रिलाई करना पड़ेगा. अगेन एक ये भी एक एक्सपीरियंस होगा फैंस के लिए भी, और इससे हमें पता लगेगा कि हमारी टीम के इंडियन कोर में स्पेशली जो यंग कोर है, जैसे आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, चाहे वो मनदीप हो गए, सरफराज जो कि यार नहीं खेल रहे, नागरकोटी जो कि दिल्ली के लिए पहला मैच खेल रहे हैं, खलील अहमद खेल रहे हैं, इनमें कितना दम है और ये क्या किस हिसाब से दिल्ली के लिए अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. पुरु, आपके क्या थॉट्स हैं जो 11 प्लेयर आज खिलाए जा रहे हैं? आपको कैसे लगता है कि एक साइड का मेकअप क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, ओपनिंग बॉलिंग कौन करेगा और डेथ में कौन बॉलिंग करेगा? आपके हिसाब से कैसी रहेगी दिल्ली की स्ट्रैटेजी आज? आई एम एक्चुअली प्रीटी हैप्पी विद द 11. एक तो टॉस जीत के फील्डिंग करिए, वो बड़ा ही अच्छा प्लान है, क्योंकि दिल्ली में मैं देख रहा हूँ 3 स्पिनर है. अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है और ललित भी ऑफ स्पिन डालता है. तो इट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी टू बोल जब बाद में जब डिफेंड करेंगे तो अच्छा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे हम बात करें यहाँ पे फॉरेनर्स नहीं है, तो यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स के पास मौका है अपना एक स्पॉट चूज करने का. जैसे मनदीप की बात करें, इन एंड आउट रहे हैं बाकी जहाँ पे IPL खेले हैं पीछे किंग से, तो एक अच्छा मौका है उनके लिए. सरफराज, आई नो इट्स अनफॉर्चुनेट दैट ही मिस्ड आउट, but I am sure it's a long season. He'll get a good chance to come back. So I'm pretty happy with the 11. नहीं, आपने राइटली नहीं, सॉरी मेरे को लगा आपने बात बोल दी अपनी. गो अहेड. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो ओपनिंग बोलेंगे ऑफ कोर्स खलील और नागरकोटी से स्टार्ट करेंगे, और खलील एक लेफ्ट आर्म डालेंगे, वो एक अच्छा ऑप्शन है. इट्स इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट. जहाँ मुस्तफिजर की बात करें तो अच्छा 11 चूज किया दिल्ली ने. थैंक यू पुरु. आपने एक और चीज बहुत अच्छे बोली कि दिल्ली ने जो 3 स्पिनर खिलाए हैं उसमें देखने वाली बात यह है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है और एक ऑफ स्पिनर है, तो इससे काफी बेसिस क्लियर हो गए. अब हम चलेंगे हमारे राइवल फैन की ओर, धवल शेटिया की तरफ. धवल, पहले तो आप ये बताएं कि अभी इस वक्त मुंबई में मौसम कैसा है और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का वेदर है उससे कुछ कंडीशंस में इफेक्ट होगा कि कोई टीम को शाम को बैटिंग करने में फायदा होगा या बॉल ज्यादा स्विंग करेगी, क्योंकि मुंबई में हमेशा बाउंस रहता है. तो व्हाट डू यू मेक ऑफ द डिसीजन एट द टॉस एंड व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द MI 11? आर यू हैप्पी विद इट? डू यू थिंक इट इज द 11 दैट कैन चैलेंज दिल्ली टुडे? क्योंकि एक और चीज है, दिल्ली और मुंबई का जो रिकॉर्ड है वो काफी नेक टू नेक है. दिल्ली के 16 विंस, दिल्ली 14 मैच जीती और मुंबई 16 मैचेस जीती हैं 30 मैचेस में से. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? Right. So firstly, weather is hot as you expect it to be in the month of March in Bombay. तो ज्यादा तो ड्यू भी नहीं आएगा क्योंकि डे मैच है, as Puru rightly said. So batting first, bowling, it's not going to really matter too much. As far as Mumbai's 11 is concerned, I think this is the strongest 11 they could have put out. Given the absentees, Surya Kumar Yadav not playing, I am very excited, of course, to see Tilak Verma, who was an expensive young buy at the auction for MI. So other than that, I think MI's batting is looking a little weaker than last year's, but then so is Delhi's bowling. So there is some sort of balance there. Delhi is obviously missing a ton of players. It is unfortunate. Some of them are injured. Some of them are still playing series overseas. So it is going to be an exciting contest. And like you said, 16-14. Before last year, it was 16-12. You all won both the games last year. So there is some payback time, I think. As far as bounce and swing is concerned, yes, Wankhede mein zyada bounce rehta hai than Brabon. But Brabon is a slightly larger ground. I still expect a high-scoring game, though.
Dhaval, one question to you. What do you make of the bowling attack of Mumbai Indians? Because over the last seasons, सबको ये लगता था कि शायद spin bowling थोड़ी weak है with Krunal and Rahul Chahar. But अभी there is Mayank Markande and Murugan Ashwin, both of them who don't make the 11 on a consistent basis for the sides that they play. So do you feel confident with the MI bowling attack, or do you think maybe Jasprit Bumrah will have to do a lot of heavy loading once again? There is Tilak Verma, who's the off-break bowler. There's Murugan Ashwin, who's bowling wrist spin. I think, as I had this opinion before the season also started, that rightly, as you pointed out, that spin bowling is a little weak for MI right now. But especially the loss of Rahul Chahar, it's not good. But we'll see. I think Murugan Ashwin has done a job in the IPL. If he's given a defined role, he can do what is required of him to do. Apart from that, we have Tymon Mills and Jasprit Bumrah to bowl the death overs. Hopefully, Jasprit Bumrah will only be required to bowl the death overs. Let's see how that pans out. And there is obviously Basil Thampi, who is a legend in the IPL, who has had some fantastic seasons from SRH in the past. And one of my all-time favorite fantasy picks also, because he was an uncapped player, very cheap, and used to take a lot of wickets and hardly on anybody else's team. So I'm excited to see it. It's slightly weaker than what you'd expect to be. Next year, we'll have Jofra also coming in, and then it's anybody's guess as to how many runs anybody can score against that attack. Thank you so much, Dhaval. That's quite an elaborate answer. We'll now move on to Shiv. Shiv, when Delhi picked up the Lord Shardul Thakur, काफी buzz था. I remember clearly DC Toli being quite excited, Delhi fans being quite excited. Come the season, what are your expectations? आपको क्या लगता है कि शार्दुल का क्या रोल रहेगा, and हम क्या expect कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर से? Can he break open the game for Delhi, or do you think it's too early to expect that, and it is going to be difficult because अभी सारे players नहीं हैं? What is your opinion on it? I think Shardul will make to the 11 completely for the season, and Shardul, जैसा सबने बताया कि ओपनिंग बॉलिंग हमारी कमलेश नागरकोटी और खलील अहमद के साथ जाएंगे, बट आई विल गो फॉर खलील अहमद एंड शार्दुल ठाकुर फॉर स्टार्टिंग 2 ओवर्स, क्योंकि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और मिडिल ओवर में शार्दुल ठाकुर वेरिएशंस भी कर सकते हैं. फॉर मी शार्दुल ठाकुर इज एन एक्स फैक्टर फॉर दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि जिस फॉर्म में वो है, रेड आउट फॉर्म में, क्योंकि वो बैटिंग से जो 30-40 रन क्विक 30-40 रन मारते हैं, वो दिल्ली को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे. एंड फॉर श्योर my expectation for Shardul Thakur are really high this season, and हम बहुत सारे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे जब शार्दुल ठाकुर को लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि हमने देखा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मैच जितवाया. ही इज अ मैच विनर, एंड शार्दुल ठाकुर के साथ हमारी बैटिंग और डीप होती है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास अश्विन थे, तो अश्विन वो वाली बैटिंग नहीं दे पाते थे हमें जो शार्दुल ठाकुर दे पाएंगे. सो इट विल बी अ रियली गुड एंड पेस अटैक का एक वो देते जैसे स्टॉइनिस देते थे. सो हमारे पास वो वाला सारा बैलेंस आ गया ऑलराउंडर वाला, इंडियन ऑलराउंडर. इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? So Shardul Thakur, we have expectation for him. Thank you, Shiv. Now I'll move on to Shagun. Shagun, my question is, what are your expectations of the local boy and someone who was retained by Delhi in the last season, Prithvi Shaw? Because last season he had 400 plus runs. His average was slightly on the lower side, 32 ki average thi, but strike rate was 160. Which was the highest amongst all openers. So do you see him replicating the same form, or do you think he'll be even more explosive because slow pitches जो चेन्नई और शारजा की थी वो इस बारी नहीं होंगी? नहीं, I'm expecting big things from Prithvi Shaw, क्योंकि एक तो we are playing in Maharashtra. He's used to the ground. He's played here all his life. तो हमारे लिए बहुत बड़ा advantage है that Prithvi Shaw is in our team, and I would definitely look forward to him of firstly playing all the games, staying fit, and also giving that smashing start that he has given us most of the times. And this bar he has even more responsibility till the time Warner is not here. So I think Prithvi Shaw se bahut zyada expectations hain, and if he has to make it to the Indian team also, isse badhiya platform nahi milega, isse badhiya बैकिंग नहीं मिलेगी टीम की. तो आई होप ही लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस. आई नो फिटनेस इश्यूज पृथ्वी शॉ के रहते हैं, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे if he can give us a good start, if he can match up to that 160-170 ka strike rate, nothing like it. So big things expected. Hopefully he lives up to it and gives Delhi that start that we need. Now I'll move on to Puru. Puru, you spoke of someone like Mandeep Singh grabbing his chances because वो काफी in and out रहे हैं जिस भी IPL टीम का वो पार्ट रहे हैं.
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी ऋषभ पंत जो है पहले पिछले 3 सीजन्स में ही आल्सो हैड द लाइक्स ऑफ शिखर and Shreyas to provide support, and then there was Stoinis and Hetmeyer. Right now, obviously those players aren't there, और उनकी जो replacements खरीदी गई हैं वो भी नहीं है because Warner and Marsh are not available. What kind of a role do you see from Pant till the time Warner and Marsh are not available? Do you see him as an aggressor? Do you see him playing as an anchor? And more importantly, where do you see him bat? Do you see him bat at 3? Because last season he batted at 3 as well. उससे पहले वो he was batting at 4, and then he's also batted at 5. So what kind of a role do you think of Rishabh Pant, the batter, is till the time Warner and Marsh are not available, and where do you see him bat? पहला सवाल तो ये कहाँ बैटिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से ही विल बैट एट 4. आई वुड आइडियली like him to bat at 4 because from there he can control the innings. और रही बात अप्रोच की, तो हम सबको पता है ऋषभ पंत एक ही तरह से बैटिंग करते हैं. बीच में एक फेज आया था जब शायद वो थोड़ा सा केयरफुल होकर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम वेल. सो मेरे ख्याल से एक ही तरह से बैटिंग करेंगे और वैसे ही करनी चाहिए. अब मेरे को जिस चीज की वजह से मैं इंडिया खेला हूँ और मैं वहां पे अच्छा कर रहा हूँ, तो व्हाई टू चेंज दैट स्ट्रेटजी. एंड डीसी फैंस और उसकी मैनेजमेंट सब यही चाहेंगे वैसे ही बैटिंग करें. नंबर 3 पे मनदीप खेलने आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एंकर कर सकते हैं इनिंग वहां पे. आपके पास ऊपर पृथ्वी शॉ है जो आप मार के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, सिफर्ट भी तेज खेलते हैं. मनदीप अच्छे विकल्प हैं नंबर 3 पे. एंड देन यू हैव समवन लाइक पंत एंड रॉबर्ट पॉवल एंड ललित, ये तीनों ही बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं. तो एक अच्छा मिक्सचर है दिल्ली के पास. हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे. आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट पृथ्वी शॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट लॉर्ड शार्दुल और अक्षर पटेल ऑफ कोर्स. पर एक प्लेयर है जो बड़ा अंडर द राडार खेल रहा है इस समय, उसका नाम है कुलदीप यादव. 2-3 साल पहले ही वाज कंसिडर्ड मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग इन इंडियन क्रिकेट. हैट्रिक वगैरह भी ली थी और कुलचा के नाम से मशहूर भी हुए थे. तो यूजी चहल तो वापस आ गए हैं, कुलदीप की वापसी नहीं हुई है. पिछला सीजन काफी उनके हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहा था, तो आई थिंक ही आल्सो हैज अ पॉइंट टू प्रूव. सो ही आल्सो कैन बी एन एक्स फैक्टर. रिस्ट स्पिन करते हैं, गुगली डालते हैं, वेरिएशंस हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. ना सिर्फ आईपीएल और इंडिया खेलने का, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो मेरे ख्याल से वो भी एक प्लेयर है जो दिल्ली के काफी काम आने वाले हैं इस पूरे सीजन में. Thank you so much, Puru. Now we'll move on to Dhaval. Dhaval, one last question for you. That is, who do you think is going to be the most dangerous player for MI to counter today? For MI to counter from Delhi, I would say it has to be Prithvi Shaw. Personally, a big fan of the guy. Having played all his cricket in Mumbai, he'll have a feel of the conditions. He knows what it's like, and he's an explosive batter right up top. Obviously, there's Rishabh Pant, but I have always thought that Prithvi Shaw, explosive top order bat, can just take the game away from you in the power play. Thank you, Dhaval. Now, one last question to all the panelists जो involved हैं आज. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या prediction है for the 10 over mark? Where do you see the game heading, or what do you think would be the score for Mumbai Indians at the 10 over mark? Shiv, we'll go with you first. Yeah, starting with the first over, 10 runs in the first over. I think Mumbai will lose 2 wickets, and it will, after 10 over, it will be around 65 to 70 for 2. Thank you, Shiv. Thank you. Shagun, what's your prediction? I'll be more optimistic. 85 for 3. मैं बोलता हूँ. I know Rohit has gone up to a flyer, लेकिन if we get 1 wicket, I think we can get 2 very quickly. Thank you. Puru, your call. The first number which came in my head was around 80. Wickets का पता नहीं, पर अगर wickets नहीं गिरे तो ये 80-100 भी हो सकता है. But I think Mumbai Indians would be somewhere around 80, 75 to 80. Dhaval, I'll change it up a little for you. What do you think is going to be the 20 over score for MI? They've got a very deep batting, so I would say about 175, maybe 180. I'm being very conservative over here because otherwise you guys will start punching me. Yeah, I'm hoping for a 200 plus given the batting lineup that they have with Kishan and Rohit looking in good form right now. But yeah, 175, 180 should be achievable and should be a good score. Well,
that's all from दिल्ली क्या चाहता है. जितनी बात करनी थी दोनों की प्लेइंग 11s के बारे में, जो प्लेयर्स के बारे में आपको लगता है कि डेंजरस हो सकते हैं दोनों टीम्स के लिए, और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आगे सीजन के लेके भी. अब मैच शुरू हो गया, तो मैच जब शुरू हो गया तो आप हमारी बातें क्यों सुनेंगे, मैच ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ दिल्ली क्या चाहता है. Hopefully, and I know Dhaval, you are looking at me, but hopefully it's a winning start for Delhi and Mumbai continue to the tradition of losing their first game. That's all from here. Oh, Delhi re tu roar macha. Thank you so much. Thank you.